Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we will revise government budget, most important questions from last 5-year board exams. Watch till the end, sure shot exam questions. Okay, so I'm going to first share the screenshot of the questions. Okay, these are all the questions that have been asked in the last 5-year board exams, and with the answer key, I'm going to just give you the answer key also. Okay, so government budget and the economy. So 2018, 2019, and on so on. Okay. You're seeing the years also mentioned here. So first, just take the screenshot. Almost these are all theory part. Okay. Now I'm going to give you here the answer key. I hope you're able to see it now. Okay, the first question is we are going to discuss as well here. The first question is what is government budget? Explain its major components. Okay, so government budget is what? Simple in statement. Annual statement of the government estimated receipts, that is the income, and the expenditure, that is whatever the government is spending for a financial year, that is usually from 1st April to 31st March. Okay, then major components, then you are going to tell here the major component is budget receipts and budget expenditure. Now budget receipts is again is having two, you can say the branches or two divisions, that is revenue receipts and capital receipts. Okay, इसके एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं या एग्जाम्पल दिए जाते हैं एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क यू इन एमसीक्यूज ये रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है कि कैपिटल रिसिप्ट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन capital receipts and revenue receipts or capital expenditure in revenue expenditure. ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इन एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट एवरीवेयर. ओके, सो इसका टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है. राइट, देर आर द फंड्स ऑन द गवर्नमेंट रिसीव्स, दे आर ऑफ टू टाइप, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दे डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी एंड डू नॉट रिड्यूस असेट्स. ओके, नीदर नॉर. ओके, देन एग्जाम्पल्स क्या, टैक्सेस हो जाएगा एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज फाइन्स. इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड वो रेवेन्यू काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. ओके, then capital receipts, these create liability or reduces assets of the government. Okay, borrowings, recovery of loans and disinvestments. Then budget expenditure again of two types, revenue that is of recurring nature and capital that is expenses that create assets or reduce liabilities, and examples have been given. Okay, in short, government budget estimates estimated receipts plus estimated expenditure of the government for one financial year. Okay, then the second question in this, either you have to attempt this question or otherwise explain allocation of resources, economic stability as the government as the objective of government budget. So this is the whole first question. The first question का ये first part था, आपका components थे and meaning of government budget. Second part में आपसे पूछा जा रहा है allocation of resources को explain करो या economic stability as objectives of government budget. So now you can take the screenshot of the second half. Allocation of resources means maximum social welfare होना चाहिए, discourage harmful goods through higher taxes, and economic stability का main aim क्या होता है, to reduce economic fluctuations like inflation and deflation and reduces taxes to boost demand, employment and maintain stable growth. Okay, then define the term tax. This is the question number 2. So tax is a compulsory payment made by individuals and firms to the government without any direct or immediate return to finance public expenditure and promote general and welfare. Then what is meant by primary deficit? So the meaning with formula. Then what is meant by fiscal deficit? That is, it is of 1 marks only. So we are just going to give you the meaning in one line. Okay, and the formula. So fiscal deficit again, excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings, and then the formula. Then question number 4, how are capital receipts different from revenue receipts? Okay, so now here we have given you, provided you the difference. You have to make the columns like this only. Okay, and the bases also, because if you want to score full in theory, then you have to practice like this only. Okay, the answer should be in this format, that is bases and then the two columns for the differences asked for. So capital receipts and different from revenue receipts, so you can go through this. Then the how are capital expenditure different from revenue expenditure, discuss briefly. Then again the same pattern we will follow here, revenue and capital. Okay, then in question number 4a, it states how are taxes receipts different from non-taxes and tax receipts. Again, they are asking for a
difference between. Okay, so the language is different, but again the answer pattern will be same. Then state any two items of revenue expenditure. So here you have examples of revenue expenditure in a government budget. Okay, so they have been asked only two items, but have been provided you five. Okay, examples. So any two you can choose from there. Then question number fifth, dash deficit includes interest payment by the government on the past loans. Okay, that is the fiscal deficit. An explanation has been also provided to you. Then question number six, define the term public goods. So the public goods is this. Okay, means all the goods and services that are provided by the government. Okay, which are non-excludable. Everyone can use it. ओके एंड नॉन राइवलरिस इन नेचर, तो नॉन एक्सक्लूडेबल है एंड नॉन राइवलरिस है, ये आपका पब्लिक गुड का फीचर भी है, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 7, टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन. सो टैक्सेशन रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी. येस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द एज द इनकम इंक्रीजेस द टैक्सेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज ऑल्सो you can say it justified that taxation reduces income inequality as the government use the tax revenue to provide subsidies, social welfare schemes, and education and healthcare to low income groups, and discourages the in concentration of wealth. Okay, so it helps in narrows income inequalities. Question number 8, free distribution of LPG connection to poor people is a sign of social justice. Identify the objective. Now this kind of question also comes कि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में, आपके पास स्क्रीनशॉट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा. And then you have to tell that what kind of this one objective of the government budget is highlighted here. तो यहाँ पे क्या है, free distribution of LPG connection to poor people helps the underprivileged and ensure fair access to essential resources, which reduces inequality and promotes social justice. This reflect the government objectives of equitable distribution of income. इस तरह के क्वेश्चन MCQ में आते हैं. Okay. Then question number 9 में पूछ रहे हैं, read the following statement carefully and choose the correct alternative from the following. First statement है, government budget is a detailed economic statement presented by finance minister. So it is true. ठीक है, the government budget is indeed a detailed economic statement presented by finance minister. Statement 2 में क्या है, government budget consists of financial programs and policies of the government for the next year. Obvious सी बात है, for the next year के लिए हम करते हैं, तो both the statements are true. That is option A is correct. Okay. Then question number 10. Read the following statement carefully and choose the correct alternative. The statement 1, recovery of loan is a non-debt creating capital receipt. Okay, so this statement is true. Recovery of loans by the government is a capital receipt and does not create any new liability. Okay, then statement 2 क्या है इसका, recovery of loan causes a reduction in assets of the government. It is a false because it does not reduce government asset. In fact, the repayment reduces the asset loans given but increase cash, so overall assets are not reduced. Okay, so option number A, that is statement 1 true and statement 2 is false. Okay, तो ऑप्शन ए आपका सही है. देन क्वेश्चन नंबर 11, एक आपको पिक्चर गिवन होगा, ठीक है, आपके पास स्क्रीनशॉट है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. सो इसमें बोला गया कैटेगराइज द गिवन आइटम्स इन द पिक्चर इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. तो टैक्स रिसिप्ट्स आपकी कौन सी आ जाएंगी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स, सेल्स एंड ग्रॉस रिसिप्ट्स एंड प्रॉपर्टी. एंड नॉन टैक्स में क्या है, मोटर व्हीकल, लाइसेंस फी, फाइनेंस एक्सेट्रा. ओके, देन 11th का बी क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू पुअर. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. सो टैक्सेस लाइक इंडिविजुअल इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वही सेम चीज़ आ जाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पुअर एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. अंडर द, इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन. अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स लाइक रिड्यूस इम्पोर्ट export duties, incentive to investors, tax rebate, etc. In the light of the above statement, identify and explain the budget objective and its likely consequences. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द प्रमोशन वो कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, दैट इज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हायर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इन डिटेल यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, देन 12B में क्या पूछा जा रहा है, अंडर zero effect, that is ZED scheme, the government of India provides up to 80% subsidy to mini, small and medium enterprises, MSMEs. Identify and explain the objective of government budget highlighted in the above
टेक्स्ट। तो 12B में क्या है, अगेन प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, राइट। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, जब आप ये सब करेंगे। स्मॉल एंड प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 80% सब्सिडी आप प्रोवाइड करें मिनी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, देन ऑब्वियस ही बात है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट, ओके। सो इट इज अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। देन क्वेश्चन नंबर 12C, इसी का एक और पार्ट है। अंडर जीरो डिफेक्ट वही स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही सेम इसका आंसर हो जाएगा। देन 12 डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन था 12 का, बी का ही पार्ट है। रिस्पॉन्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर गिव इट अप campaigns, large number of Indian families have voluntarily surrendered their cooking gas subsidy. Identify and explain the objective behind this action taken by the government of India. Okay, so इसका आंसर आपका ये है। By encouraging create equitable distribution of income by creating wealthier families to give up LPG subsidies, the government can redirect these funds to support poorer and underprivileged household. Okay, first इसका explanation हो गया. Then second है, this action reflects the objective of social justice and reducing income inequalities and ensuring that government resources benefit those who need them most. Okay, so in short, promote fair distribution of resources and achieve equity in society, right? और आपका जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसी में, जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, उसका जो लास्ट है 12 का लास्ट वाला, ठीक है, सेट 3 जहाँ पे लिखा होगा अंडर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अप टू 80% वाला, उसका सेम आंसर आपका हो जाएगा इसका, जहाँ पे जेड का एक और आपको दिया गया एग्जाम्पल और आंसर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, डिस्टिंग्विश। अब देखो जो 13 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ डिफरेंसेस पूछे गए हैं, तो मैंने आपको डिफरेंसेस दे दिए हैं, बट आई इट्स अ रिक्वेस्ट हियर कि जब भी आप डिफरेंसेस लिखें तो बेसिस और दो कॉलम्स जिस चीज़ में डिफरेंस बताया गया वो ज़रूर इसी तरह करिएगा। उसमें क्या होता है कि आपका एक तो एग्जैक्टली आंसर रहता है टू द पॉइंट, एग्जामिनर को करेक्शन करने में बहुत आसानी रहती है, एंड उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है थियोरी में आपको पूरे मार्क्स मिलने के, ओके। तो प्लीज़ फॉलो दिस पैटर्न ओनली, ओके। डिस्टिंग्विश देखो पूछा गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। मैं इसको बार बार रिवाइज नहीं करा रही हूँ बिकॉज यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे मैंने गवर्नमेंट बजट का पूरा आपका थ्योरी विद प्रैक्टिकल सब कुछ कराया है, आप उसको ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपके सामने ये है विद एग्जाम्पल्स, ओके। देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, आई हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड यू द आंसर हियर। एंड देन द लास्ट दो आपके और हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट, direct and indirect tax, and revenue receipts and capital receipts. I hope all the answers we have covered so far here that have been asked in 5-year board okay exams. So students, today we revise meaning of government budget, objectives of budget, revenue and capital receipts, revenue and capital expenditure, fiscal deficit, revenue deficit and primary deficit here, balance, surplus and deficit budget. Okay, so these are most repeated questions of last 5 years, very important for exams. Revise this chapter daily for 10 minutes, practice numericals again, and you will definitely score full marks in budget, okay. And remember, toppers don't study more, they revise more. So you can go through the previous videos that I have already uploaded in my playlist, okay. And you can also go for other chapters for score booster series also, okay. So if this helped you, like, share, subscribe Economics at Ease. Watch the budget numericals plus MCQs playlist for full preparation. Thank you for studying with me. Keep revising, keep practicing, and keep scoring high. See you in the next video. Thank you. And one more thing I would like to say, just tell you here. In the upcoming video will be of income and your which chapter was the determination of income and employment. Okay. So we will try to complete the 5-year most highly expected questions with answer key of the chapter determination of income and employment. So don't miss that also, okay? So in the next video, we will just do the revision of the chapter. Thank you for watching.